So today we will see the previous year questions of year 2025 part second. तो अभी तक हमने like 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 से सब cover किए PYQs in two parts, okay? Part 1 and part 2. 60 question in each part. Without wasting time, let's start today's session. So हमने last part में 60 question देखे थे. अभी like 61 से start करेंगे. A pump lifts 93,600 liters of water per hour. Q दिया है हमें 93,600 liter per hour. Okay, no doubt. Against a total head of 21 meter. Head दिया हमें 21 meter. Compute the water horsepower, that is WHP. So first we have to convert this in meter cube per second. So Q is nothing but 93.6 meter cube per hour. Yeah. Okay. So we have to divide by 3600. Okay. So Q becomes 93.6 into 3600. Sorry, divided by 0.026 meter cube per second. Okay. So ये हमारा Q आ गया. ये ऐसे रखो अभी हमें क्या पूछा है वाटर हॉर्स पावर. सो वाटर हॉर्स पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा रो जी क्यू एच अपॉन कितना है एक बार चेक कीजिए तो 1000. ओके हियर वी हैव टू फाइंड ऑलरेडी सब मीटर और मीटर क्यूब पर सेकंड में. सो सॉरी दिस इज लाइक 1000 आएगा. सो रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000 kg per meter cube. So take as it is 1000. G acceleration due to gravity 9.81 meter per second square. Okay into Q अभी निकाला हमने 0.026. ओके यहाँ पे पॉइंट है इंटू एच कितना है 21 एज इट इज 1000. सो 1000 गेट कैंसल ओनली 9.81 इंटू 0.026 इंटू 21. सो इसका कैलकुलेशन करते हैं अभी हम 9.81 इंटू 0.026 इंटू 21 5.35. ओके ये आ गया हमारा बट दिस इज इन वॉट किलोवाट. ओके we have to convert into HP. So we have to divided by 5.35 upon 0.746 because 1 HP is equal to 0.746 kilowatt. Okay, so again divide it. 5.35 divided by 0.746 7.17 7.177 that is 7.18 HP. Option C is correct. So once again welcome back to the AgriAddict YouTube channel. I am Shreyas, your mentor for agriculture engineering subject. So today we will see the previous year questions of year 2025 part second. तो अभी तक हमने like 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 से सब cover किए PYQs in two parts. Okay, part 1 and part 2. 60 question in each part. So before going to start, I will give my basic short introduction. Yes, I am currently pursuing PhD in Processing and Food Engineering Division from Indian Agriculture Research Institute, that is IARI, New Delhi. Also, I secured All India rank 11 in ICAR PG examination and overall rank 4 in Maharashtra CET examination. So without wasting time, let's start today's session. So हमने last part में 60 क्वेश्चन देखे थे, अभी like 61 से start करेंगे. So question is, which of the following are phases of anaerobic digestion? What is anaerobic digestion? Anaerobic digestion nothing but digestion or process in absence of oxygen. Okay, for the production of biogas. Okay, so here first one is enzymatic hydrolysis. Yes, in enzymatic hydrolysis there is conversion of like complex product into simpler one. Okay, so it is one of the phase. Then next one is no, esterification is like conversion into biodiesel. Okay, so this is not correct. Acidogenesis, yes, this is one of the process in which they converted into alcohol, CO2, H2, simple products. Okay, then methanogenesis. Yes, in methanogenesis again conversion into CH4 and CO2, that is biomass. Okay, so these are the three processes mainly or phases in anaerobic digestion for production of बायोगैस. ओके, सो मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है. जस्ट 1 मिनट. यस, लाइक जो
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वो ब्रेक डाउन होते हैं. ओके, हियर ब्रेक डाउन ऑफ complex organic matter such as carbohydrates, then again आपका हो गया प्रोटीन, okay, fat, etc. So this is related to anaerobic digestion, phases of anaerobic digestion. So here A, C and D are correct. Liquefaction is also wrong. So A, C, D, yes. C option is correct. Okay. So next question. The maximum spacing of tree crops in gully beds and sites should not normally exceed. So यहाँ पे हम जो trees plantation या vegetation होता है gully bed में वो क्यों होता है? To stabilize the soil, okay, or to reduce the soil erosion. So there is some standardized value. So the of spacing. So it should be not exceeded above 2 meter. Okay. So ये ध्यान में रखना. और ये क्यों plantation किया जाता है? सॉरी, फॉर स्टेबलाइजेशन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ पब्लिक ट्यूबवेल टू प्राइवेट ट्यूबवेल इन इंडिया. यस, देयर आर like some private tubewells also there due to the need of water. Okay, so there is for one public tubewell there is 73 approximately private tubewell. Okay, so ratio is yes this one. मतलब एक ट्यूबवेल पब्लिक होगी, सपोज ऐसा मान के चलो, तो उसके प्रोपोर्शन में 73 प्राइवेट होगी. लाइक सपोज 1000 है पब्लिकली, मतलब गवर्नमेंट की, तो 73,000 लाइक प्राइवेट जो हम इंडिविजुअली हम कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are the steps involved in the process of dry milling of maize? Okay, first one is degerming. Yes, in degerming there is removal of germ layer, okay, and bran layer. Removal of germ layer. Again, conditioning. Yes, conditioning is the pre-treatment or adjusting of moisture content for proper milling process. Okay, here adjustment ओके, और इसको हम प्री ट्रीटमेंट भी कहेंगे, कह सकते हैं. टू इनहांस द एफिशिएंसी ऑफ मिलिंग प्रोसेस. ओके, देन पॉलिशिंग. अभी पॉलिशिंग क्यों की जाती है? फॉर बेटर अपीयरेंस. ओके, बट दिस विल बी डन इन राइस मिलिंग. ओके, तो ये नहीं होगा. फॉर बेटर अपीयरेंस. सो इसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन ऐड होता है, लाइक लस्टिंग पॉलिशर आर यूज. ओके, सिफ्टिंग. यस, सॉरी, यस, सिफ्टिंग. सो सिफ्टिंग भी है. सिफ्टिंग इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ फ्लोर and maize in the end of milling process. Okay, so here degerming, conditioning and sifting, these three are the steps involved in process of dry milling of maize. So A, B, D. Yes, option D is correct. Only C is not correct. It is related to rice milling. Next question. Assertion reason. In a reversible cycle, entropy of the system increases. अभी देखो, पार्ट 1 में भी हमने देखा था एंट्रोपी, मतलब एक क्वेश्चन था कि क्या चेंज नहीं होगा, क्या मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है कि नहीं. सेम हियर इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान में रखना, एंट्रोपी इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, सो हियर स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. रिवर्सिबल साइकिल्स ऑकर विदाउट एनी एंट्रोपी चेंज. यस, दिस इज करेक्ट वन. अभी बताया कोई कांस्टेंट रहते, सो हियर ए इज रॉन्ग बट R is correct.
the process in which carbon and nitrogen both are absorbed, okay, by the metal surface to get it hardened is known as. अभी देखो कार्बोराइजिंग, इसमें सिर्फ कार्बन, ओके, कार्बन एब्सॉर्ब होता है, सो ये नहीं है, हमें पूछा क्या है, बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ओके। देन साइनाइडिंग, यस, साइनाइडिंग में बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन, this is one of the case hardening process in which they are diffused, both diffuse in metal surface, okay, both diffused in metal surface or metal. So cyaniding is the correct option. Flame hardening, it is use of flame only. No role of carbon and nitrogen. Again induction hardening with the help of induction followed by, yes, here also followed by quenching, okay. मतलब हम देखते हैं ना कि पहले हम हीट करते हैं और उसको एकदम कोल्ड वाटर में डिप करते हैं, सो इट गिव्स द स्ट्रेंथ, ओके। आपने फोर्ज एंड फायर एक करके का लाइक शो आता है हिस्ट्री चैनल पे, वो आपने वर्कशॉप में भी ट्राई किया होगा अपने इंजीनियरिंग में, कि आप हिट करते हो मेटल को, प्रोडक्ट को, और उसको तुरंत कोल्ड वाटर में क्वेंच करते हो, ओके, फॉलोड बाय क्वेंचिंग। Same here, okay, so here cyaniding is the correct option. So next question, on which of the following parameter does the thin layer model of drying bed in drying of grains depends on? So first one is temperature of air. Yes, temperature is important in drying. Air flow, yes, अभी देखो एयर फ्लो ज्यादा होगा तो फास्ट ड्राइंग होगी, कम होगा तो लाइक प्रॉपर ड्राइंग नहीं होगी. देन इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, यस, अभी ऑलरेडी सपोज लिया हमने एक प्योरी लिया या पेस्ट लिया, उसका ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, उसमें पानी वाटर का कंटेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ड्राइंग टाइम ज्यादा होगा. सो और also for thin layer drying there is some specific bed height is there, okay. So here initial moisture content is also matters, but density there is no direct relationship, no direct relation, okay. So here only three factors matters: temperature, airflow and initial moisture content. So A, B, C, yes, option D is there, okay. So next question, which of the following is an example of physico-chemical conversion technique used to convert biomass into useful form of energy? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था स्टरिफिकेशन. स्टरिफिकेशन में क्या होता है, जो बायोमास होता है उसको हम बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके. कन्वर्जन इनटू biodiesel, it is one of the form of energy, okay. पायरोलिसिस में हम सिर्फ थर्मल या थर्मल, दे आर बोथ थर्मल कन्वर्जन, okay. And anaerobic it is only 1 minute, हाँ 1 आपको, हाँ, this is biochemical conversion. और हमें पूछा क्या है, फिजिको केमिकल, सो इसमें बोथ आर देयर, ओके. सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टरिफिकेशन डी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. यस, व्हेन द स्प्रिंग इंडेक्स इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वॉल स्ट्रेस फैक्टर. इसका भी डायरेक्ट आंसर है, जब स्प्रिंग इंडेक्स इंक्रीज होता है तो जो वॉल फैक्टर है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ओके, लाइक दिस. Okay, so this is the direct answer one. Next question is, yes, the capacity of main canal in India is usually varies from. So there are, first one is main canal, then branch canal and then distributaries, okay. So first one is main canal.
then second one is branch canal, and last one is again in distributaries, major distributaries, minor distributaries, and last one is water course. This is maybe public or private one. Okay, so main canal में क्या होता है? It is around 280 to 425, 280 to 425 cubic meter, okay, per meter cube per second भी कह सकते हैं. And in branch canal it is around 28 to 45 meter cube per second. In distributaries less than 28 meter cube per second. Okay, so here correct answer is D. Okay, and the water course may be government, okay, or private or individual one. Okay, so next question देखते हैं. Okay, so before going to the next question, there is special announcement. This year we prepared a special mock test bundle for agriculture engineering subject for the examination ICAR PG. So it will very fruitful for your preparation. It contains around 30 plus sets of mock test, and also there is full length mock test, subject wise mock test. Like there are different departments: farm machinery, processing, and food engineering, irrigation and drainage, SWC, that is soil and water conservation engineering, farm structure, renewable, and miscellaneous topics, okay, are also there. Again, there is PYQs with solution, and every question is like provided with solution and explanation, and you can attempt same mock test 3 times, so it will reduce your silly mistake and increase efficiency. Okay, so please visit the AgriAddict website and purchase a mock test bundle at just 499. So there is only 30 to 35 days are remaining for examination. So please purchase it and solve it. If you have any doubt or query, feel free to ask. Okay. Again, it contains questions like paper pattern of ICR, like assertion and reason, statement type, match the following, numerical selection, multiple selection type, choose the correct one, MCQ, etc. Okay. So it is very fruitful for getting good rank. Okay. So please grab this opportunity. Then next question. For long-term storage of seeds, the moisture content should be in the range of. Okay. So here correct option is 5 to 8. There is lot of confusion. Like in milling, there is 12 to 14% moisture content. But for storage of seed, the moisture content is 5 to 8. If the moisture content is above the 10% or more moisture, so it like spoil the grain. Okay. If moisture greater than 10, okay, so it spoils seeds. And if moisture less than 5%, it reduce viability. Okay, so correct answer is 5 to 8%. This is optimum moisture content. Okay, next question. The proper sequence of implement or machine used for paddy cultivation as per the sequence of the field operation. Okay, so one by one हम देखते हैं. Disc harrow, disc plow, rotary puddler, cono weeder and transplanter. Okay, so first step is plowing. कभी भी याद रखना. So first is disc plow. To plowing, or we can say conversion of soil. ओके, सो बी ऑप्शन कहाँ का हम देखते हैं. सभी में बी ऑप्शन है. ओके, और इसमें नहीं सिर्फ. सो ये ऑप्शन हमारा गया यहाँ पे. सो नेक्स्ट वन देखते हैं हम डिस्क हैरो. सो डिस्क हैरो इज फॉर ब्रेकिंग ऑफ क्लॉट्स. दिस इज सेकेंडरी टिलेज. ओके, ब्रेकिंग ऑफ क्लॉट्स, सेकेंडरी टिलेज. ओके, नेक्स्ट वन इज अभी बी के बाद ए का है. सभी में ए. ओके, सो फर्स्ट सेकेंड. नेक्स्ट देखते हैं अभी इसके बाद क्या होगा बताओ तो. लाइक इधर डी होना चाहिए.
ये 0 हो गए. Rotary puddler. Rotary puddler. There is one special term, puddling, okay, associated with paddy cultivation. Puddling. Soften the field or soil for sowing, okay, or transplanting. जो हम देखते हैं ना, and here cage wheel is attached, okay, to rear wheel of tractor. देन इसके बाद ट्रांसप्लांटिंग होती है, क्योंकि राइस एक जगह से हम दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज, दिस इज थर्ड वन, देन दिस इज फोर्थ वन, ट्रांसप्लांटिंग. ओके, एंड लास्ट वन इज कोनोविडर. दिस इज द पोस्ट हार्वेस्ट वन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस, और वी कैन से आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग. ओके, for weeding purpose. Okay, so here B A C E, B A C E D, B A C E D, yes, option C is there, क्योंकि यहाँ पे D पहले आया है, यहाँ पे B पहले आया है, so option C is correct. Next question, safe limit of land slope for efficient irrigation in medium loamy soil. Okay, so medium loamy soil में कितना होता है? So first हम सब type देखते हैं. First one is like हाई कह सकते हैं हम. ओके, इसको हम क्ले सॉइल कहेंगे. देन सेकेंड वन इज मीडियम, उसको हम कहेंगे लोमी. एंड लास्ट वन इज लाइक स्मॉल. ओके, और हम लेस कहेंगे इसको इन लाइक सैंडी सॉइल. Okay, so here for high clay soil the range should be like 0.05 to 0.20. so ये option तो नहीं है हमारा. then for medium loamy soil जो हमें पूछा है 0.20 to 0.40 इसका आंसर है. okay, correct answer ये है हमारा. then हमें last नहीं पता है, तो it will become 0.25 to 0.65. okay, this is the correct order. मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, एक्चुअली ये करेक्ट ही है, फिर भी लाइक एक ही मिनट, only 1 minute. Yeah, this is correct one. Okay, and it is like a flatter surface. Okay, or flatter slope, and this is steep slope, and this is medium. This is all about the land safe limit of land slope. Okay, so next question. Some questions are factual on, so आपको याद ही रखना पड़ेगा, वो like table दिए होते हैं टेक्स्ट बुक में. Okay, so which of the following are predominant in damaging food grains in sealed silo when the oxygen level is low and grain moisture is high? First condition क्या है? Oxygen level is low, and second condition क्या है? Grain moisture is high. Okay, so insect. अभी insect जो होती है वो लो मॉइस्चर कंटेंट में लाइक लिव नहीं कर सकती है, सो दिस इज नॉट फेवरेबल कंडीशन. माइट्स इज आल्सो नॉट लाइक वो सर्वाइव नहीं कर सकते. ओके, सो माइट्स इज आल्सो रॉन्ग. बैक्टीरिया, अभी बैक्टीरिया जो होती है वो उसको मॉइस्चर वाटर कंटेंट चाहिए, बट हियर ग्रेन मॉइस्चर इज हाई, बट देयर इज अगेन टाइप्स ऑफ मॉइस्चर कंटेंट लाइक बाउंड मॉइस्चर, unbound moisture, so not all water is available for bacteria directly, but high moisture content, again low oxygen level, this is all favorable condition for fungal growth.
Okay, so here option D is correct, fungi. Okay, fungi भी कह सकते हैं. So insect and mite both are predominant in absence of oxygen. Okay, and here more water, available water content needed. So here only fungi is fulfill the condition. Okay, so next question. A pump lifts 93,600 liters of water per hour. Q दिया है हमें 93,600 liter per hour. Okay, no doubt. Against a total head of 21 meter. Head दिया हमें 21 meter. Compute the water horsepower, that is WHP. So first we have to convert this in meter cube per second. So Q is nothing but 93.6 meter cube per hour. Yeah. Okay. So we have to divide by 3600. Okay. So Q becomes, करते हैं अभी हम calculation 1 minute just. So इसका calculation आएगा 93.6 into 3600. Sorry, divided by 0.026 meter cube per second. Okay. So ये हमारा Q आ गया. ये ऐसे रखो अभी. अभी हमें क्या पूछा है? वाटर हॉर्स पावर. सो वाटर हॉर्स पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा? रो जी क्यू एच अपॉन कितना है? एक बार चेक कीजिए तो 1000. ओके, हियर वी हैव टू फाइंड ऑलरेडी सब मीटर और मीटर क्यूब पर सेकेंड में. सो सॉरी, दिस इज लाइक 1000 आएगा. सो रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर. कितना है? 1000 kg per meter cube. So take as it is 1000. G, acceleration due to gravity, 9.81 meter per second square. Okay, into Q अभी निकाला हमने 0.026. ओके, यहाँ पे पॉइंट है. into H कितना है? 21 as it is 1000. So 1000 get cancel. Only 9.81 into 0.026 into 21. So इसका कैलकुलेशन करते हैं अभी हम. 9.81 into 0.026 into 21, 5.35. ओके, ये आ गया हमारा. बट दिस इज इन वॉट? किलोवाट. ओके, and we have to convert into HP. So we have to divided by 5.35 upon 0.746, because 1 HP is equal to 0.746 kilowatt. Okay, so again divide it. 5.35 divided by 0.746, 7.17, 7.177, that is 7.18 HP. Option C is correct. Okay, first we convert Q liter per hour into meter cube per second. Again with the formula WHP is equal to rho G QH upon 1000. We put the value simply and answer is in kilowatt, and just divided by conversion factor 0.746. ओके, ये पॉइंट दिखने रहा है शायद, मैं नोटिस कर रहा हूँ. ओके, सो 7.18 इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two matrices A and B are said to be equal if. Okay, they are the same order. Yes, दोनों की ऑर्डर लाइक सेकेंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर सेम होनी चाहिए. Each element of A is equal to corresponding element of B. Yes, suppose Aij is this denotes the row and this denotes the column. So Aij is equal to Bij, like same होना चाहिए. So both are correct here. Both statement are correct. Okay.
फर्स्ट ऑर्डर सेम होनी चाहिए. सपोज दिस इज द, सो ABCD लिख डालता हूँ. दिस इज मैट्रिक्स A, so matrix B should be okay same order. Okay, and again in second statement क्या कहा है, जो यहाँ पे एलिमेंट है सपोज AIJ, तो BIJ वो भी सेम होना चाहिए. ओके, so these are the two condition. Which is the angle between the drains and inspection manholes? हमें ड्रेन एंड इंस्पेक्शन मैनहोल में एंगल बताया, तो दिस इज डायरेक्टली स्टैंडर्ड 90 डिग्री. ओके, सो इसका भी मैं रिलेशन बताता हूँ आपको 1 मिनट जस्ट, कि ये 90 डिग्री मतलब क्या डिनोट करता है. यस, इट इंश्योर्स द स्मूथ फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर. ओके, एंड आल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी. व्हाई? sorry, provides smooth flow of wastewater and stability. Okay, this is like 90 degree angle होता है. Next question, medium irrigation project have cultural command area, that is CCA. Okay, यार मेरे हैंडराइटिंग को क्या हो जाता है, CCA. ओके, सो कल्चरल कमांड एरिया अकॉर्डिंग टू द एरिया, मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है. सो फॉर माइनर प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट एंड हम कह सकते हैं मेजर प्रोजेक्ट. ओके, सो फर्स्ट वन इज माइनर. सो माइनर प्रोजेक्ट के लिए एरिया होता है लेस देन 2000 हेक्टर. ओके, देन फॉर मेजर फॉर मीडियम the area lies between 2000 to 10,000 hectare, and for major project greater than 10,000 हेक्टर. सो यहाँ पे हमें क्या पूछा है मीडियम के लिए ना, सो 2000 to 10,000 हेक्टर. ये देखो कंफ्यूजन कैसे किया है हेक्टर एंड एकड़ में. सो ऑल एरिया इन हेक्टर. ओके, तो कल्चरल कमांड एरिया मतलब इतना एरिया उस प्रोजेक्ट में इरिगेट हो रहा है. ओके, सो हियर ऑप्शन करेक्ट इज बी. नेक्स्ट वन, a combination of kinematic pair joined in such a way that the relative motion between the link is completely constrained. Constrained मतलब उसको like rigid या फिर रोक, मतलब हम रोक रहे हैं. ओके, like resist कर रहे हैं. So this is nothing but known as kinematic chain. Yes, so kinematic, with the help of kinematic chain we constrain the motion. Okay, relative motion. Then next question is match the following. Yes, tractive condition and tractive efficiency of two-wheel drive tractor. Okay, so here one by one हम देखते हैं. Concrete, firm tile surface and soft surface. अभी इसमें क्या है, जैसे जैसे हम like rigid to soft मतलब जाएंगे वैसे वैसे ट्रैक्टिव इफिशियंसी की वैल्यू कम होती जाएगी. सो कंक्रीट इज द मोस्ट हार्डेस्ट. सो हियर फॉर कंक्रीट ट्रैक्टिव इफिशियंसी इज 87%. सो ए का फोर्थ ऑप्शन किसमें, फर्स्ट में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं. सो आंसर तो हमारा मिल गया है. सो वन बाय वन हम देखते हैं. मैंने क्या बताया, जैसे जैसे हार्डनेस कम होगी ट्रैक्टिव इफिशियंसी भी कम होगी. फॉर फर्म ट्रैक्टिव कंडीशन इट शुड बी लाइक समवॉट लेस hardened than concrete. So ये इसके बाद आएगा 72. ओके, देन नेक्स्ट वन आएगा हमारा टिल सरफेस. अगेन इट इज फॉर 70 एंड सॉफ्ट सरफेस. ये देखो अभी सॉफ्ट सरफेस आया. सो फॉर सॉफ्ट सरफेस the value becomes 55 less tractive efficiency. So option A is correct here. Okay, so next question देखते हैं अभी. Again statement type question. The standard Proctor test
was developed by R.R. Proctor in 1933 for the construction of earth field dam in the state of कैलिफोर्निया. ओके यस, मतलब इन्होंने बनाया था इन 1933 में. सो दिस इज द जनरल स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टेस्ट. अभी देखो ऐसे क्वेश्चन आते, एक में गिवन बेसिक पार्ट दिया जाता है और एक में उसका अजम्पशन या कंडीशन या क्या फॉर्मूला वो पूछा जाता है. द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टिंग सॉइल at various water content in the mold in 3 layered equal layer, each layer being given 25 blows of 5.5 lb rammer drop from a height of 12 centimeter. yes, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया पर एक ही इन्होंने मतलब ट्रिक डाली या फिर घुमाया है. दिस इज नॉट 12 मीटर, ये है 12 इंचेस. ओके, और सेंटीमीटर में कितना होगा, लाइक अप्रोक्स इन्होंने 30.5, एक्चुअली 30 होता है बट 30.5 सेंटीमीटर. ओके, so here 12, not 12 centimeter, 12 inches. okay, so statement 2 is wrong but statement 1 is correct, so option C is correct. okay, so next देखते हैं अभी. okay, arrange the following renewable energy sources in increasing order of their potential. so हम potential कैसे निकालेंगे, like हम पावर के हिसाब से निकालेंगे. okay, so one by one हम अभी देखते हैं. बायोमास पावर, दिस इज लेस पोटेंशियल. ओके, रिन्यूएबल इसलिए अभी ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, लेस पोटेंशियल, एंड इट्स वैल्यू लाइज बिट अराउंड 16,000 किलोवाट. मैं एक बार चेक करता हूँ. ओके, यस 16,000 इज देयर. देन इसके बाद आता है हमारा लार्ज हाइड्रो पावर. दिस इज फ्रॉम marine, okay, like ocean technology, and this is somewhat more efficient than biomass. so इसकी भी वैल्यू अराउंड 45,000 किलोवाट तक जाती है. देन इसके बाद आता है विंड पावर. ओके, लाइक विंड टर्बाइंस आर देयर. ओके, सो इसका वैल्यू अराउंड 1,02,000 किलोवाट आता है, एंड द मोर इफिशिएंट, मोस्ट इफिशिएंट. अभी देखो गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट कर रहा है. देयर इज वन यस पीएम कुसुम मिशन. ओके, योजना या फिर मिशन कह सकते हैं, फॉर सोलर जनरेटिंग सोलर पावर, एंड इट इज अराउंड 7,50,000 किलोवाट. सो करेक्ट इज 1, 2, 3, 4. ADCB. yes, last option. ओके, इस तरह से हमने सॉल्व किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाइड्रोलिक राउटिंग मेथड एम्प्लॉय कंटिन्यूटी इक्वेशन करता है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी करता है. आगे देखते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अनस्टेडी फ्लो. यस, हाइड्रोलिक routing is mainly used for hydrologic flow condition, and this is continuity equation and equation of motion. इसको हम momentum equation भी कह सकते हैं. okay, so C is correct option. okay, next one देखते हैं अभी. the efficiency of parking brake test, okay, of tractor is conducted on 18% slope facing up and 12% facing down. yes, यही करेक्ट ऑप्शन है. अभी देखो 18% स्लोप फेसिंग अप क्या इंडिकेट करता है, इट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ ब्रेक टू रेजिस्ट द और रेजिस्ट अगेंस्ट ग्रेविटी. ओके, इट चेक्स एबिलिटी ऑफ ब्रेक टू रेजिस्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब वो कितना होल्ड कर रहा है. ओके, लाइक एबिलिटी ऑफ ब्रेक टू होल्ड भी कह सकते हैं हम, होल्ड और होल्ड. ओके, एंड 12% फेसिंग डाउन. सो ये क्या डिनोट करता है, चेक्स स्टेबिलिटी, कि कितना वो स्टेबल रह रहा है. ओके, सो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, कि वो
अप हिल और डाउन हिल दोनों कंडीशन में इट सेटिस्फाइड, कौन सा कलर लो, हाँ, सो व्हाइट नहीं लेता दूसरा, यस, सो बोथ सेटिस्फाइड both condition, that is uphill and downhill. So this is correct option. Okay. So next question देखते हैं अभी हम. According to the 58 report of that is 2022-2023 of the Standing Committee of Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, what is the target farm mechanization? Farm mechanization में भी हर साल एक क्वेश्चन आता है. India aims to the achieve by the year 2047, like 100 year after independence. So अभी कितना है हमारा, ये क्वेश्चन आया था in year 2023. In year 2023 it is around 40 to 45% farm mechanization. In year 2025 it will become 47%, and in year 2047 टारगेट कितना है हमारा 75%. ओके, हो पाएगा कितना देखते, लाइक वी हैव टू इंक्रीज द use of like mechanical implements, okay, more, and like custom hiring process is there, and in post harvest technologies are there. Okay, so it is very long term process. तो ये टॉपिक कर लेना फार्म मैकेनाइजेशन में. इसमें क्वेश्चन आता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स related to farm mechanization. Drone Didi scheme, so around 15,000 drones are provided to self-help group of for women in village. Okay, on rent basis. Again, PM Kisan Kusum Yojana is there. So there are lots of camping are run by government to increase the farm mechanization level in India. So ये भी जनरल क्वेश्चन आता है हर साल एक, तो वो भी आप कर लेना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैराथन में तो कवर कर लेंगे वैसे. सो द which of the following are true in respect of design of any tool, equipment or workplace? So it is necessary to define the user population. Yes. इसकी क्या डिमांड है, क्या एक्चुअल आउटपुट चाहिए हमें. Then it is not practically feasible to design the equipment as suit as 100% population. Yes, as every individuals have choice, so it not fulfill or satisfy everyone's need. So this is not suit for 100% population. This is also right. The design is made in such a way that it suit 99%. ये भी हम कह नहीं सकते. तो ये इन्होंने कहा है कि 99% को सूट होगा, अभी हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. So this is not accepted here. The design is achieved by setting 5th percentile and 95th limits. Yes. तो अभी इसमें क्या है, 5th percentile for women and 95th percentile for men. Okay, this is the ratio. The population who falls outside the 5th percentile limits and 95th percentile limit will not be able to use the equipment. Yes, क्योंकि according to that ये हमने डिजाइन किया है. Okay, so here only A, B, D are option are correct. Yes, option D is correct. Okay, so next one, assertion reason type question. Assertion: the power generated by the wind turbine is proportional to the cube of wind speed. Yes, there is formula P is equal to 1/2 rho A V cube. So here V cube of wind speed. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है. So आप कमेंट में बताइए what is the minimum speed required for wind speed required to proper functioning of windmill. Okay, ये क्वेश्चन बताना, ये जनरल क्वेश्चन है पर ये हर साल पूछा जाता है. या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड्स, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स, ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. दिस इज फ्रॉम RE1 डिपार्टमेंट. सो फर्स्ट तो करेक्ट है. विंड हैज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ velocity. So what is formula for kinetic energy? 1/2 mv square. Again, square of velocity. Also this is correct. But as we see, there is no
relation between two statements. Both are correct, but there is no any explanation or relation to first one. Okay, so here both A and R correct, but there is not any correct explanation of assertion. So option B is correct here. Then next, the boiling point of refrigerant R12. So first, R12, what is meant by R12? So this is one nomenclature of refrigerant. So R12 denotes difluoro, sorry, first chloro लिखते हैं, डाइक्लोरो डाइफ्लूरो मीथेन. अभी इसका में बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्चुअली -29.8 डिग्री और अराउंड 21.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बट यहाँ तो कहीं नहीं ऑप्शन. सो दिस इज लाइक इसके मार्क्स दिए गए थे. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज मतलब आंसर की में दिया है इसका आंसर, पर वो रॉन्ग है. -29.8 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर. ओके, एंड दिस इज द नॉमेनक्लेचर. इसका भी हम मैराथन सेशन में कवर करेंगे कि वो कैसे डिनोट कर सकता है. लाइक देयर इज फॉर्मूला MNNP. ओके, सो ये हम देखेंगे. ओके, मैराथन सेशन में. सो फॉर नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रिकमेंडेड बेल्ट स्पीड फॉर कन्वेइंग ग्रेन इज जनरली इन द रेंज ऑफ. अभी ये भी आपको रेंज याद होनी चाहिए, 2 to 2.5. It will be like maximum 3 meter per second, but this is for special purpose. Okay, but normally it is 2 to 2.5 meter per second, or increasing the speed may damage the belt. Okay, so correct belt speed is 2 to 2.5 meter per second. This is general one. Specific heat capacity as a unit, simple one, joule per kg Kelvin. So what is basic formula? Q is equal to mc delta c, delta t. So we have to find C, specific heat. So C is nothing but Q upon M delta T. So Q is nothing but in joule, mass in kg, and delta T in degree Celsius, or we can say in Kelvin here. Okay, this is mass, this is temperature. Okay, so here correct option is A. अभी इसके डायमेंशन भी पूछे जा सकते हैं. ओके, डायमेंशंस. ओके, आल्सो इम्पोर्टेंट वन. कभी पेपर हार्ड आया तो ये कर, मतलब ये ध्यान में रखना, या फिर इधर से भी आप निकाल सकते हो. ओके, डायमेंशन नो डाउट. आपको यूनिट याद हो गए तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो. The forces of 100 Newton, 200 Newton, 300 Newton have their lines of action parallel to each other, but acts in opposite direction. जो important है वो लाइन ऑफ भी, अभी तो कंप्यूटर पेपर होता है तो आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो ध्यान में रखना है, इसके हिसाब से आंसर देना. ये अभी कुछ लाइक अभी तक तो कुछ हमें यूज नहीं होगा. दिस फोर्सेस आर नोन एज. सो फर्स्ट वन इज कोप्लानर काउंटर फोर्सेस. नो, ये इधर कुछ दिया नहीं कि एक ही प्लेन में लाया हो रहा है. कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट. नो. लाइक पैरेलल फोर्स. ओके, the parallel forces are act in similar direction and each parallel to each other. Okay, so here condition is in same direction, which is not fulfilled here. So last option बचा हमारा unlike. Okay, parallel to each other but opposite in direction. ओके, लाइक वन ऐसा हो यार, हाँ एक ऐसे हो रहा है, एक ऐसे हो रहा है. ओके, लाइक दिस. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी यार, ये क्वेश्चन हम मतलब बाद में कवर कर लेंगे, सॉरी फॉर दैट. ओके, which of the following represents sensible cooling in the psychrometric? Yes, every year there is one question on psychrometric chart. Okay, so here sensible cooling में no phase change. Okay, no phase change, only change in here like lower of temperature. Okay, here cooling. So it is represented by horizontal line. Okay,
simply. Simple one. Yes, so before going to again next question, we prepared a special mock test bundle for agriculture engineering subject for the ICAR PG examination. It contains 30 plus sets of mock test which covers full length, subject wise and topic wise mock test as per the syllabus of examination, and also paper pattern, like questions are there like assertion and reason, statement types, uh, then match the following numerical multiple selection, choose the correct one, MCQ. Okay, so it is very fruitful and for practicing and getting good marks. Also you can attempt same mock test 3 times to reduce your silly mistake and like increasing your efficiency. Okay, so every question is provided with solution and explanation, and again there are PYQ. अभी तो हम solution देख रहे हैं, तो आप practice के लिए भी use कर सकते हैं. And please go to the website of AgriAddict and purchase the mock test bundle at just 499. Apply the coupon code. Okay, there is special offer 50%, and there is only 30 to 35 days are remaining for examination. So grab the opportunity. Okay, in the end only revision and practice of maximum question matter. क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सब क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो जम्बलिंग होता है. टू अवॉइड दैट सिचुएशन, please refer this one. Okay, so for getting good rank and admission in premium institute like IRI, PUCI Bhopal, CFTRI, okay, etc. and so on. So next question देखते हैं अभी. Terminal velocity of wheat in meter per second in the range of. So what is terminal velocity first? So terminal velocity is nothing but the velocity at which the particle are suspended in air. So what is the main condition is there? The drag force, upward drag force is equal to the downward gravitational force on the grain. Okay, so upward drag force is equal to the downward gravitational force on grain. So आप एक नोटिस करना, suspended in air. आप जैसे जैसे साइज और वेट बढ़ेगा वैसे वैसे जो टर्मिनल वेलोसिटी वो भी बढ़ेगी. नोटिस एज साइज एंड वेट so one by one देखते हैं. So for rice purpose, sorry, for rice कलर दूसरा लेते हैं, व्हाइट लेते हैं राइस के लिए. For rice it is around 6 to like 6 to 9 मीटर पर सेकेंड. ओके, उसके बाद वीट लेते हैं. इट इज अराउंड 6.5 to 11 यहाँ पे दिया है जैसे. सो हमारा यही करेक्ट ऑप्शन है. सो नेक्स्ट वन अभी और 2 एग्जांपल लेते हैं हम. उसके बाद आता है मेज. मेज के लिए कौन सा लेते हैं? ग्रीन ही लेते हैं, नहीं येलो लेते हैं मेज के लिए. इट इज अराउंड 11 to 13 मीटर पर सेकेंड. देखो जैसे जैसे साइज बढ़ रही है टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ रही है. एंड लास्ट वन इज सोयाबीन. ओके, it is around 13 to 16 meter per second. So here correct option is C, 6.5 to 11. Okay, so next question देखते हैं अभी. Throughput capacity is a performance indicator of which of the following type of machine? Very simple. Throughput capacity क्या denote करती है? Grain per unit time. Okay, amount of grain. ओके, सो ये किस में होगा? इट इज रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग. ओके, हार्वेस्टिंग और वी कैन से थ्रेशिंग, कि कितना हम इनपुट दे रहे हैं और कितना आउटपुट आ रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है. यस, थ्रेशिंग मशीनरी. ओके, टिलेज मशीनरी में हम किससे डिनोट कर सकते हैं? लाइक फील्ड इफिशियंसी.
ओके अगेन थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी आ जाए. सोइंग एंड प्लांटिंग में हम किससे डिनोट करेंगे? सीड रेट. ओके एंड स्प्रे एंड डस्टर में लाइक नोजल डिस्चार्ज रेट. ओके और एप्लीकेशन रेट और uniformity coefficient. Okay, so here threshing efficiency is the correct answer. Okay, it will be like in kg per hour or we can say ton per hour. Okay, so throughput capacity is related to threshing machines. Okay, next question. In updraft gasifier, this is from RE. Okay, question from RE. Produce in the reduction zone leaves together with the pyrolysis product and steam from the drying zone. So मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि RE से या इस टॉपिक से. सो हमने एक एग्रीएडिक्ट वेबसाइट पे एक पीडीएफ डाउन अपलोड की है मेड इजी करके. सो उसमें फ्रॉम ईयर 2020 टू 2025 जो क्वेश्चन पेपर है उसमें डिपार्टमेंट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, कौन से बुक्स रेफर करना चाहिए आपको, वो सब इसमें इंक्लूडेड है. सो फॉर एफएमपी एंड पीएफई there will be like 25 to 30 question are asked out of 120 each. Okay, and for ID and SWC 15 to 20 question. For RE and farm structure there is around 4 to 5 question every year they ask. And for miscellaneous topic that is engineering mathematics, engineering mechanics, computer application, then probability statistics, electrical engineering and etc. They ask about 15 to 20 questions. So whole it covers 120. Okay, so it will we all analyze the papers and syllabus. Okay, so it will also helpful for your preparation. Then yes, in updraft gasifier the gas produced in the reaction zone leaves together with pyrolysis product and steam. Yes, अभी updraft gasifier में air down from below वो enter होती है and वो pyrolysis zone remove करती है. But in downdraft gasifier all decomposition product from pyrolysis and drying zone passes. So इसमें enter ऊपर से enter होती है, air enters from top, air enters from top. So it covers all zones like pyrolysis. 1 minute. Like zone का सीक्वेंस गलत हो सकता है. ओके ऐसा ही लिखता हूँ पायरोलिसिस जोन. ये हम सब लाइक इन मैराथन सेशन में इन डिटेल पढ़ेंगे. ओके सेकेंड वन आपका रिडक्शन जोन. थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन. ओके सो आपको लाइक क्लीनर एयर मिलेगी, क्लीनर एयर. सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो ऑप्शन ए यस यस अरे यार. ओके सो दिस विल करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम. Sorry. Determine the value of bifurcation ratio. This is from SWC. इसके again there are form factor, bifurcation ratio, drainage density. These are all term related to SWC. मतलब एक ही टॉपिक से 139 दिया है n and n+1 ऑर्डर कितना दिया है स्ट्रीम नंबर 46 as the total number of streams first order and second order. So what is bifurcation ratio? It is denoted by RB, number of streams of order n. Suppose 2 ratio मतलब इसका ratio 2 number of streams of order next higher order, like okay we can say next higher order. Okay, so here 139 upon 46 simply 46 threes are I think
44 नहीं कितना होगा 40 120 यस 138 ओके 1 बचा सो 0 then we take it is around 1 again okay 3.10 yes 3.02 around okay so ये सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा ओके 3.02 so next अभी देखते हैं हम the human ear is very sensitive and can detect the change as low as 1/10 of bell अभी देखो this is the one of the logarithmic bell is one of the logarithmic unit of sound intensity unit to measure sound intensity and 1/10 bell is nothing but known as decibel okay जैसे हम ट्रैक्टर का नॉइज निकालते हैं 80 डेसिबल 90 डेसिबल ओके सो दिस इज करेक्ट वन सो हमारे ईयर है वो इतना चेंज है इतना स्मॉलेस्ट 1/10 ऑफ बेल वो डिटेक्ट करता है उसको हम डेसिबल कहते हैं देन द ह्यूमन ईयर कैन टॉलरेट द मिलियन टाइम्स प्रेशर एज ग्रेट एज दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग बिफोर द डिस्कम्फर्ट ऑफ पेन बिगिन यस लाइक इसका भी एक प्रेशर है दिस इज अराउंड 20 माइक्रोपास्कल इसके अराउंड लाइक मिलियन टाइम्स ऑफ प्रेशर ओके इसके बाद हम पेन लाइक वी सफर फ्रॉम एनी इंजरी और डिस्कम्फर्ट यस सो हियर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट ओके इसलिए देयर इज सम limitation on noise of operation of tractor okay like 80 decibel 90 decibel so here statement 1 is correct next question देखते हैं so the friction experienced by the body when in motion abhi again there are different types of friction rolling friction so rolling friction when body is in rotation okay so ye nahi hoga hamara static friction when body is in rest so ye bhi nahi hoga dynamic friction yes when body is in motion so this is the right answer and limiting friction this is maximum friction provided before static friction so this is again wrong so option C is correct okay dynamic friction so next हम देखते हैं अभी question so there are also some basic questions some factual questions some are application based all are mixed are there okay specific resistance of a conductor depends on so dimension of conductor no composition of conductor yes मतलब उसमें क्या क्या है इसका भी एक फॉर्मूला है R is equal to rho into A by L so R denotes resistance of conductor it denotes resistivity and nothing but resistivity is nothing but a specific resistance this is area this is length so here no any relation to dimension composition of material yes resistance of conductor no the both dimension and composition no so here only B option is correct okay so next one the shear force diagram of a cantilever beam carrying a gradually varying load from 0 to 0 at free end and W per unit length at the fixed end is called so अभी देखो जो शेयर फोर्स डायग्राम है ऑफ कैंटिलीवर वो फॉलो करती है इट फॉलोज फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ओके बट सिंस उन्होंने क्या कहा है शेयर स्ट्रेस सॉरी शेयर फोर्स
due to the shear force, it follows second order equation, okay? Like, sorry, second degree. So it follows parabolic curve, okay? So this is the correct option, okay? So next question is, disc harrow with a draft of 20 kilonewton is to be pulled at 6 किलोमीटर per hour. हमें draft दिया है, speed दिया है, okay? In a firm field by a diesel tractor, the tractive and transmission coefficient on the soil is 0.75. What will be the PTO power? We have to find PTO power, okay? There is formula, power is equal to draft into speed. ओके सो ड्राफ्ट हमें 27 किलो न्यूटन दिया है, सो हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे एंड ये 6 इंटू 1000 बाय 3600 इन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ओके ये आएगा किलोवाट में, ये आएगा हमारा 6 इंटू 10 बाय 36, इसको हम इधर कर लेते हैं 6/36 इज इक्वल टू 10/6, 6 10 जा 1.6 on the 6 4 is there na 40 6 oh yes, so ये सॉल्व करते हम, so कितना आएगा देखो तो, it is around 45,000, okay, around 45,000 watt, so 45 किलोवाट. अभी 45 किलोवाट इधर नहीं है आंसर, बट इन्होंने हमें कोएफिशिएंट दिया है, सो वी हैव टू डिवाइड पावर इज इक्वल टू, इधर नहीं लिखता हूं मैं, हाँ पावर इज इक्वल टू 45/0.75, ओके सो ये कितना आएगा अभी 45/0.75, 60 kilowatt. Okay, so this is our right PTO power. Okay, so this is our correct answer, 60 kilowatt, option D. Okay, so next question अभी हम देखते हैं. With increase in temperature, thermal conductivity of metal. Yes. So with increase in temperature, thermal conductivity is also like increases. अभी इसके रिलेशन क्या है मैं बताता हूँ. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन मूव हो गए. So as electron moves, there is scattering or displacement of electron. So with the intermolecular or attraction and conduction, they transfer the current easily or fastly. So it increases the thermal conductivity. This is very simple one. Next question. Again statement type question. Differential is used to allow one wheel of tractor to move faster than the other wheel. Yes, differential का main function ही ये होता है. So it takes like outside wheel while turning, outside wheel travels more or takes longer distance as compared to inside wheel. Okay, so this is correct one. Differential lock allows both the wheel to move at the same speed. Yes, it locks the motion, and like in like specific condition for performing operation, differential lock is used. So same both provided with same torque, both will provided with same torque and the speed is also same. Okay, so both statement are correct here. Option A is correct. So next one. Okay, so match the following. Channel routing. So मे बी इसका भी एक एक करके बताता हूँ मैं, मैंने इसका शॉर्ट और भी निकाला था. So channel routing studies flood wave and changes in channel slope. Okay, so इसका yes मैंने changes in shape. So first option is correct. So next one is reservoir routing. इसमें दिया है reservoir stage and stage volume of outflow hydrograph for inflow hydrograph. Yes, so this is related to this outflow flow reservoir. So it is the sum of outflow. 1 minute.
Yes, spillway flow and other release. ये shortener. This is like spillway flow and other releases. Okay, so it is sum of this. Okay, and then outflow. This is one. This method को हम क्या कहते हैं? Muskingum routing, and this is the standardized formula. So here 1, 2, 3, 4. Yes, option A is there. Okay, simply channel routing is denoted the change in shape. Okay, and waves, then reservoir routing, the reservoir stage and stage volume to outflow hydrograph for inflow hydrograph, and uh, from reservoir is the sum of spillway flow and other releases. Then like denoted by QSI plus QSP, and outflow from channel is like given by Muskingum routing formula. Okay, this is the formula. This is the subscript to 1. Okay, so next question is constant force P is equal to 2I minus 5J. Okay, so, we have given two forces in form of vector. Acts on a particle, determine the work done when the particle is displaced from A to B in position vector. Okay, so हमें ये भी दिए position vector. Okay, so we have to find work done. So work done का formula क्या है? Force into displacement. Okay, so firstly force निकालते हैं हम. So यहाँ पे दिया है P and Q, दोनों का एडिशन करेंगे हमें फोर्स आ जाएगा. So just take 2 minus 1I plus minus 5 plus 2J plus 6 minus 1K. So I minus 3J plus 5K. ये आ गया हमारा F. Okay, no doubt. Now displacement. A B दिए है ना दो वेक्टर, सो B माइनस A करेंगे हम. सो 4 minus 6, सॉरी 6 minus 4, यही गलती कर देते हैं. I plus 1 minus of minus 3 J plus minus 3 minus of minus 2 K. Okay, minus 3 minus and minus 2. Okay, again डबल ब्रैकेट आएगा यहाँ पे. 6 minus 4 2I, 1 minus minus प्लस हो गया, वो होगा 4J minus 3 plus 2 minus 1K. minus 3 plus 2 minus 3 plus 2. ओके यस, ये भी आ गया हमारा D. सो अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? यस, वर्क डन is equal to force into displacement. Just take dot product. 1 into 2 plus minus 3 into 4 plus 5 into minus 1. 2 minus 12 minus 5. So here 2 minus 17 minus 15. Okay, this is our correct answer. Minus 15. Okay, so here yes, A is the correct option. So firstly, work done is equal to force into displacement. We find force P plus Q. Here constant forces are there, so we sum it. Then displacement D A B, दो वेक्टर दिए, so B minus A किया, हमें displacement मिल गया. फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, जस्ट सिंपली 1:2 plus minus 3:4 plus 5 into minus 1. Okay, and just simply the answer is 2 minus 17 minus 15. Okay, so next question देखते हैं अभी हम. So again there is match the following. So annealing. So annealing is nothing but the one of the cooling treatment for refining grain and improves mechanical properties. Okay, so एक का sorry
Yes, so annealing process is related to refining of grain, okay, and this is one of the cooling treatment. Then ए का फोर्थ ऑप्शन कहाँ है? इधर है, इधर है, इधर है, मतलब ये ऑप्शन गया. अभी बी का देखते हैं हम, थर्ड सेकेंड वन कोई भी हो सकता है. नाइट्राइडिंग, अभी देखो नाइट्राइडिंग इज नथिंग बट द केस हार्डनिंग प्रोसेस, ओके. दिस इज केस हार्डनिंग प्रोसेस. सो दिस इज रिलेटेड टू, अभी हम केस हार्डनिंग क्यों कर सकते हैं? टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ओके. सो इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज सरफेस हार्डनेस, टू इंक्रीज strength. Okay, next one, bar tempering. Okay, so bar tempering is nothing but again it is related to hardness. It is also known as mar quenching. Okay, mar quenching. Okay, so it is related to hardness, improves the hardness of the whole mass. Then normalizing, it is again related to refining, okay, of grain structure. इसमें नाम में लिया है नॉर्मलाइजिंग. सो हियर डी का फर्स्ट ऑप्शन किस किस में? इसमें और इसमें, एंड सी का सेकंड इसमें. सो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, दिस वे वी सॉल्व द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following can result in increased depth of penetration with disc harrow? First one is increase the gang angle from 15 to 45 degree. Yes, with the help of gang angle we increase the pressure on soil and directly it affects the, increase the penetration in soil. Okay, first one is correct. Then second one, keeping the hitch point low. अभी देखो hitch point low रखा है तो although वो मतलब जो हम पेनिट्रेट करेंगे वो डेप्थ है वो बढ़ेगी, ओके, उससे, क्योंकि हम और नीचे कर रहे हैं हिच पॉइंट को, ओके. सो इट अप्लाइज मोर प्रेशर, ओके. देन इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड स्पीड. अभी फॉरवर्ड स्पीड इंक्रीज किया तो वो रेजिस्ट करेगा, ओके, मतलब सॉइल रेजिस्ट करेगी और वो इजीली इम्प्लीमेंट मूव होगा, तो इससे शैलो फ्लोइंग होगी. दिस इज नॉट फॉर deep or proper penetration. So this is wrong. So A and B correct up to this. Decreasing the concavity of disc. Yes, हमने concavity disc disc की concavity reduce की. Concavity is nothing but distance. Okay, suppose this is disc and the distance between concave side, okay, to the flat distance between concave side to the flat surface, okay. सो हमने कॉन्केविटी डिक्रीज की तो इससे क्या होगा? ऑल्दो द सॉइल थ्रोइंग इज लेस, ऑल्दो सॉइल थ्रोइंग मतलब जो सॉइल कन्वर्जन होगा वो कम होगा, बट इट हेल्प्स टू increase depth. So ultimately it increases soil penetration. So it is also right. Wider space between the disc. Yes. Again हमने जितना ज्यादा स्पेस रखेंगे उतना ही इंटरफेरेंस कम होगा, ओके. लेस इंटरफेरेंस. Okay, so this is also correct. So A, B, D, E are correct. Yes, still option, last option is there. Only forward speed is not beneficial or helpful to increase the depth, okay. Okay, this is question from mathematics. If x and y दिया and we have to find d square y by dx square. So here first we have to find dx by dt because here the variable is t. So directly हम find करते हैं. a तो constant रहेगा, okay. So cos का आएगा sin, okay. डायरेक्ट लिखता हूं मैं माइनस साइन प्लस, अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल, ओके. सो t का आया 1, साइन t एज इट इज, ओके, प्लस अभी t एज इट इज रहेगा, साइन का आएगा cos t, ओके. यहाँ पे हमारा आ गया. उसके बाद a माइनस साइन प्लस साइन गेट कैंसल, सो ए टी cos t हमारा dx by dt आया, ओके. अभी हम इधर निकालेंगे dy by dt, सेम
ए एज इट इज साइन टी का आया कॉस टी माइनस, अभी माइनस साइन ऐसे ही रखते हैं, ब्रैकेट में डालते, टी का अभी हम 1 आया तो कॉस का कितना आएगा, माइनस साइन टी आएगा डेरिवेटिव, ओके। अगेन माइनस साइन एज इट इज रखेंगे। अभी देखो टी एज इट इज लिखेंगे एंड एक मिनट सॉरी इधर हमने पहले टी का निकाल लिया है ना, टी का 1 आया, कॉस एज इट इज निकाल, ओके, माइनस अभी टी एज इट इज एंड कॉस का आएगा माइनस साइन टी, ओके, सो इट विल बिकम माइनस, सो ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं हमें, ओके ओके अप टू दिस। अभी ए एज इट इज कॉस टी माइनस कॉस टी, ये प्लस टी साइन टी होकर जाएगा, ओके, माइनस से अंदर गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, देन ए कॉस प्लस माइनस गेट कैंसल, ए टी साइन टी, ओके। अभी हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ओके, सो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी, सो dt गेट कैंसल हो जाएंगे, ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ए टी गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस tan टी, ओके, dy बाई डी एक्स हमें मिला tan टी। अभी हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स, सो वन स्लाइड ऐड करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, so here d by dx of dy by dx, so dy by dx of tan x, sorry tan t, so there is again one problem, यहाँ पे वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू हम x डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पर here वेरिएबल is t, so here we have to divide न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय dt, ये टर्म हमारे पास है, ओके, ये tan t एज इट इज, tan t का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर t, एंड ये टर्म हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, कितनी आई थी, dx बाई dt at cos t, सो जस्ट पुट इट, हाँ यहाँ तक आ गए अभी, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अभी सेक एक्स और सेक टी को हम 1 अपॉन कॉस एक्स कॉस टी लिख सकते हैं, यस, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी इंटू ए टी कॉस टी, सो कॉस टी और कॉस स्क्वायर टी कॉस क्यूब हो जाएगा, ए टी एज इट इज कॉस क्यूब टी, दिस इज द फाइनल आंसर, ए 1 अपॉन ए टी कॉस क्यूब टी, सो ये ऑप्शन है क्या, यस, फर्स्ट ही ऑप्शन है 1 अपॉन ए टी कॉस क्यूब टी, ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, द लेंथ ऑफ स्टैगर काउंटर ट्रेंच यूजुअली रेंजेस फ्रॉम, यस दिस इज आल्सो स्टैंडर्डाइज वैल्यू, 2 to 3 मीटर में जो स्टैगर कंट्रोल ट्रेंच है वो लाए होता है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following fuels in order of their increasing heating value, okay, हमें heating value, yes, here the as per the answer की option is D, but there is some changes, so मैं one by one आपको बताता हूँ कि क्या क्या वैल्यू है एक्चुअल में, ओके। सो जो इथेनॉल है इसकी वैल्यू लाइज करती है 29.7 मेगाजूल में, ओके, सो अगेन डीजल इज 45.5, ओके, मेगाजूल पर केजी में, डीजल 45.5 मेगाजूल पर केजी, ओके। देन अगेन वन बाय वन में बताता हूँ आपको, गैसोलीन एंड ब्यूटेनॉल, सो गैसोलीन इज अबाउट 46.7 मेगाजूल पर केजी, एंड जो प्रोपेन है वो 49.5, एंड जो ब्यूटेन है उसकी हाईएस्ट है 50.3 अराउंड, ओके, सो दिस इज द करेक्ट वन। सो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो आएगा हमारा बी ई डी, सॉरी बी फर्स्ट वन, देन ई डी
सी एंड ए। सो ऐसा कई ऑप्शन नहीं दी गया है उन्होंने, ओके। सो दिस इज करेक्ट ऑर्डर, ओके, बट अकॉर्डिंग टू आंसर के ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पोरस मीडियम? सबको पता है डायसिस लॉ, ओके। हेनरीज लॉ क्या सोल्युबिलिटी डिनोट करता है, ओके, सोल्युबिलिटी। डाल्टन्स लॉ इक्वल प्रेशर and Newton's law viscosity, and Dices law flow in porous medium. So here option A is correct, okay. Next one, irradiation has been permitted by FAO, that is Food and Agriculture Organization, IAO, International Atomic Energy Organization, WHO, World Health Organization, Joint Expert Committee for use in food commodities up to overall average dose of. So there is some limitation or like एक उन्होंने लिमिट फिक्स किया है. So the unit of irradiation is ग्रे और किलो ग्रे. So 10 किलो ग्रे ये जो वैल्यू है ये उन्होंने फिक्स की है, ओके, as per the expert committee of these organizations. Next one, the measure of the ability of material to absorb and convert electromagnetic energy into heat. So there is a dielectric loss factor is responsible to convert the electromagnetic energy, okay, like to absorb and convert electromagnetic energy into heat, okay. heat में convert करने के लिए dielectric loss factor use करते हैं हम. Next, the slip of an induction motor is defined as, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ns, like ns is the synchronous speed, okay, and n is normal speed. So here the slip is of induction motor is defined as ns minus n upon ns, okay, ns minus n upon ns. So next question, this is basic formula. And in harvesting grain with 5 meter combine, the time required for the emptying the grain tank average 8.5 minutes per hectare. Turning, adjusting and the other miscellaneous interception accounted to 3.6 minutes per hectare. The average width of cut is 0.3 meter less than that of the rated width. And forward speed is 4 km/h. Speed दिया है हमें, पहले तो speed नोट डाउन कर लेते हैं हम, जो important है वो. And 5 meter width दिए, so W and S हमें मिल गया है. What will be the field efficiency? So first we have to find theoretical field capacity, जो कि फॉर्मूला है WS upon 10. So 5 into 4 simply ये कर लेते हैं, so 20 upon 10 ऐसा ही आएगा ना. हाँ, yes. So it is 2 hectare per hour. यहाँ तक तो आ गए. So we have to find time. Okay. एक मिनट मैं देखता हूँ ये. यस, थेरोटिकल टाइम निकालना है हमें, वो आएगा मिनट पर हेक्टर में, ओके. दिस इज थेरोटिकल वन, मिनट पर हेक्टर. अभी देखो मिनट पर हेक्टर है और हेक्टर ऊपर है और आर नीचे, तो ये हमें उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. सो हियर 1/2, बट दिस इज 1 हेक्टर पर आर में, तो इंटू 60 करना पड़ेगा हमें. सो 30 मिनट पर हेक्टर, ये आएगा हमारा थेरोटिकल. अभी उन्होंने क्या दिया है, द एवरेज विड्थ ऑफ कट इज 0.3 मीटर लेस देन द रेटेड विड्थ. सो अभी हमें एक्चुअल निकालना पड़ेगा, एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी. सो सेम, अभी टोटल कितना था 5 मीटर, सो एक्चुअल कितना आएगा 5 माइनस 0.3 4.7 मीटर, ओके. सो 4.7 इंटू 4 अपॉन 10, बाकी सब सही मतलब वैसे रहेगा. सो इसका कैलकुलेशन करते हैं अभी हम. सो 4.7 इंटू 4 अपॉन 10, 1.88 हेक्टर पर आवर. सेम अभी इसको भी हमें कन्वर्ट करना है एक्चुअल टाइम में, ओके. सो एक्चुअल टाइम के लिए हम फिर से क्या करेंगे, अभी
60 से डिवाइड करेंगे, ओके। सो एक्चुअल टाइम 60 अपॉन 1.88, सो इसका आंसर कितना आएगा? 60 अपॉन 1.88 31.91, वही आ रहा है कि देखो, हाँ 31.91 मिनट पर हेक्टर, ये ध्यान में रखना, ओके। यहाँ तक तो आ गए। अभी हमें देखो इधर टर्निंग, एडजस्टिंग एंड अदर मिसलेनियस इंटरसेप्शन दिए, सो हमें वी हैव टू ऐड दिस इन टोटल इफेक्टिव टाइम में, ओके। सो टोटल इफेक्टिव टाइम, जो एक्चुअल टाइम आया है हमारा, एक्चुअल टाइम प्लस लॉसेस, सो एक्चुअल आया हमारा 31.91 प्लस लॉसेस कितने यहाँ पे 3.6 मिनट, ओके। वो एडजस्ट और कोई लॉसेस है क्या? नहीं है, सो जस्ट ऐड 3.6, सो 31.91 प्लस 3.6 35.51, ओके। नाउ हमें पूछा क्या अभी, व्हाट विल बी द फील्ड इफिशियंसी, हमें पूछिए फील्ड इफिशियंसी, ओके। सो फील्ड इफिशियंसी के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला है, जस्ट सिंपली लाइक जो हमारा टेम्परेचर क्या आता है, एक्चुअल अपॉन सॉरी मतलब थ्योरेटिकल अपॉन एक्चुअल। अभी एक्चुअल ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें हमें ज्यादा लॉसेस हुए, बट हियर देयर इज आल्सो वन टर्म, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एम्प्टिंग द ग्रेन टैंक एवरेज 8.5 मिनट पर हेक्टर, सो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ओके इसमें। सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड सॉरी ओके, सो फील्ड इफिशियंसी, सो फील्ड इफिशियंसी इज इक्वल टू जो हमारा थ्योरेटिकल टाइम आया है, ओके, डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। सो थ्योरेटिकल टाइम हमारा आया था 30 अपॉन 35.51, एंड जो ऑलरेडी उन्होंने दिया है 8.5 मिनट पर हेक्टर लॉस हो रहा है, वो भी ऐड करेंगे हम, ओके एक्स्ट्रा। सो इट विल बिकम 40 अपॉन ये कितना 30 अपॉन 35.51 प्लस 8.5 44.01, ओके। अभी आंसर आएगा हमारा फाइनल, सो 30 अपॉन 44.01 0.68, ओके। सो दिया है कैसे कुछ आंसर, या 68.16%, ओके। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ओके, क्योंकि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, ओके। सो इसमें क्या किया हमने, पहले थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी निकाली, एक्चुअल स्पीड इनटू ओरिजिनल लेंथ विड्थ, सो ये आई, वो हेक्टर पर आर में आई, पर हमें टाइम निकालना था थ्योरेटिकल मिनट पर हेक्टर में। सो पहले 60 से इसको डिवाइड किया, देन एक्चुअल निकाला, क्योंकि उन्होंने दिया था विड्थ ऑफ कट इज रिड्यूस टू 0.3 मीटर बाय 0.3 मीटर। देन उसके बाद हमने सब लॉसेस को ऐड किया, देन अगेन देयर इज 8.5 मिनट पर हेक्टर लॉस इज देयर, सो टोटल 30 अपॉन 44.1 ये फील्ड इफिशियंसी हमने निकाली, ओके। सो द आंसर इज 68%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, a tire has following marking on it 380 upon 84 okay, this is the one of the standardized nomenclature. Which of the following is true with respect to this making? So okay, the tire has nominal section width, yes, this denotes the sectional width, okay. The tire has nominal section width of 85 mm, no, this denotes 85% of width, okay. So this is wrong, here percent होना चाहिए था। The tire has diagonal construction, no, ऐसा कुछ डिनोट नहीं किया है, क्योंकि इधर R दिया है, मतलब it denotes radial construction, okay. Then the nominal rim diameter of tire is 34 inches, yes. The nominal rim diameter of tire is 85 inches, no, 85 का रिलेशन मैंने बताया, it is 85% of width. Radial, R denotes radial construction and rim diameter is 34. So 1, 2, 3.
1, 2, 3. All conditions are satisfied here. So only A, then D and E. Yes, option C. A, D, E option are correct. So next one. The chemical that is found to be most suitable as water evaporation inhibitor is. So here ethyl alcohol. Ethyl alcohol and methyl alcohol both have small chain, okay? Due to small chain length कह सकते हैं. चेन लेंथ क्यों? क्योंकि लेस नंबर ऑफ कार्बन. हम कहते हैं ना लाइक बस खत्म हो गया यहाँ पे इथिल और मिथिल अल्कोहल का. मिथिल में तो एक ही कार्बन रहता है, इथिल में दोनों रहता है. सिटिल, यस, दिस इज लॉन्ग चेन लेंथ, ओके, एंड दिस इज आल्सो most suitable for water evaporation inhibitor. Butyl alcohol again same one. So your option is C, correct. Okay. So next one, the shape of the ciploid weir. Abhi ciploid weir is one of the trapezoidal weir. This is question from ID, irrigation and drainage engineering, and इसका ratio होता है 1:4, right? 1 is horizontal and 4 is vertical. Okay, so correct option is B, trapezoidal. Okay, and ratio याद रखना 1:4, 1 horizontal, 4 vertical. Then last question is, which of the following forces acts in attrition mill? Abhi there are different types of milling equipment and there are different principle of size reduction. So यहाँ पे अभी shearing and crushing, yes, these are the हम attrition mill में क्या करते हैं? Shearing. So ये दोनों के बीच में लाइक ग्रेन्स के बीच में शेयरिंग होता है एंड क्रशिंग, ओके, क्रश भी करते हैं सेम टाइम पे. सो हियर शेयरिंग एंड क्रशिंग बोथ ऑपरेशन आ रहे हैं. इम्पैक्ट एंड क्रश में इम्पैक्ट लाइक इन बॉल मिल देयर इज इम्पैक्ट प्रिंसिपल इज कॉम्प्रेशन मिल क्रशर में टीयरिंग एंड इम्पैक्ट इज देयर आल्सो. सो हियर शेयरिंग एंड थ्रेशिंग, सॉरी थ्रेशिंग ये आ गया है, क्रशिंग इज देयर. ओके, so this way we covers all 120 question. So in between some there is confusion, but it is like okay. So avoid that type of silly mistake. So for that purpose we have to solve or practice more and more question, okay, and more reading. So they like in exam the question is directly asked from book, like directly line. Yes. So हमने तो बनाई है mock test bundle. Please visit the website and purchase the mock test bundle at just 499. It covers full length mock test, subject wise and topic wise as per the syllabus, and you can attempt single like every mock test 3 times. Okay, so it is very beneficial one, and there is question patterns like हमने देखा है सेशन रीजन आ गए थे, बहुत सारे स्टेटमेंट टाइप भी थे, न्यूमेरिकल भी like 10 to 15 are numerical, very simple, like within 1 to 2 minutes we can solve it. So again उसमें solution भी दिया है आपको, explanation भी दिया है हर क्वेश्चन का, और जो 4 ऑप्शन है तो चारों के रिलेशन दिए कि ये रॉन्ग क्यों है, गलत क्यों है, इसका फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशंस आर देयर. So it is very beneficial. So please visit the website and purchase it. Okay, and then yes, so thank you for watching video. If you have any doubt please comment it and please like it. So I am like हम बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इसका बहुत कम कंटेंट है, और इसी तरह हमने from 2020 to 2025 सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए. सो आप सब वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एंड आपके एग्जाम के लिए जस्ट 30 to 35 डेज बचे, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके, शेयर करना आपके दोस्तों. लेट मीट इन मैराथन सेशन. थैंक यू.